In this module, we will discuss the polyunsaturated fatty acid of biological importance. As we know from the previous few modules कि polyunsaturated fatty acids क्या होते हैं. The polyunsaturated fatty acids contain more than one double bond, जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, वो polyunsaturated है. इसी तरह अगर किसी में कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो हमने डिफाइन किया था कि वो fully saturated fatty acid है. तो हम इसमें डिफाइन करेंगे कि जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से हैं. दीज इंक्लूड लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलीक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड. लिनोलीक एसिड which contains, as we have discussed already in the previous few modules, कि linoleic acid is having 18 carbon chain with 2 double bond, one at the 9th position and one at the 12th position from the carboxyl end. Similarly, alpha linolenic acid is also an 18 carbon compound but having 3 double bond, one at the 9th, second at the 12th and third at the 15th position from the carboxyl end. इन्हीं को हमने डिफाइन किया था. अगर ये हम मिथाइल एंड से इसको डिफाइन करें तो ये इसमें से एक ओमेगा 3 होगा और एक ओमेगा 6 होगा. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. थर्ड वन इज द एराकिडोनिक एसिड व्हिच इज अ 20 कार्बन कंपाउंड हैविंग 4 डबल बॉन्ड्स और 4 एरियाज ऑफ अनसैचुरेशन. Of these, linoleic acid and linolenic acid are essential fatty acids. हमने पहले भी डिफाइन किया था कि essential amino acid भी हमने डिफाइन किए हैं. इसी तरह essential fatty acids are those fatty acids which are required for in the diet. अगर हम डाइट में नहीं लेंगे तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. ये बॉडी के अंदर these are cannot be synthesized. So linoleic acid and alpha linolenic acid are essential fatty acids, whereas arachidonic acid is synthesized from the linoleic acid. कि एराकिडोनिक एसिड लिनोलीक एसिड से सिंथेसाइज हो जाता है. Arachidonic acid becomes essential if linoleic acid is deficient in the diet. कि हमने ये डिफाइन किया है कि linoleic acid और linolenic acid both are essential fatty acids. If linoleic acid is deficient in the diet, then the arachidonic acid becomes essential because it is produced or synthesized from the linoleic acid, which is an essential fatty acid. This is the diagrammatic presentation or structure of the linoleic acid and linolenic acid. Both are हमने define किया है कि दोनों जो है वो essential amino acids है. This is the alpha linolenic acid. दो हमने define initially दोनों ends किए. One is the acid end or the carboxyl end and the other is the methyl end. जो हमने इसकी ये डिफाइन की थी 9, 12 एंड 15 पोजीशन. दिस इज फ्रॉम द एसिडिक एंड और द कार्बोक्सिल एंड. फर्स्ट इज ऑन द 9th पोजीशन, सेकंड एट द 12th पोजीशन एंड थर्ड एट द 15th पोजीशन. बट इफ वी काउंट इट फ्रॉम द दिस मिथाइल एंड द अदर नॉमेनक्लेचर व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट फ्यू मॉड्यूल्स, तो दिस इज द ओमेगा 3 फैटी एसिड. दिस इज द ओमेगा 3 फैटी एसिड के थर्ड पोजीशन कार्बन पे अगर मिथाइल एंड से इसको डिफाइन करें तो ओमेगा कार्बन, ये वाला मिथाइल एंड वाला कार्बन इज ओमेगा कार्बन. इसके थर्ड, दिस इज द ओमेगा कार्बन, इसकी थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है. सो लिनोलेनिक एसिड इज द ओमेगा 3 फैटी एसिड व्हिच इज एन एसेंशियल फैटी एसिड. Similarly, linolenic acid is also an essential fatty acid, but it is having 2 double bonds. Similarly, having 18 as in the linolenic acid, 18 carbon compound, but the saturation takes place at the 9th and 12th position from this acidic end. And this is, if we count from the omega carbon, this is the 6th position. So this is the omega 6 fatty acids. We have discussed this omega nomenclature and the other type of nomenclature in the last few modules. This is again the diagram of the linolenic acid, which is the omega 3 fatty acid. Linoleic acid is again omega 6 fatty acid. Similarly, arachidonic acid is having 20 carbon compound
which is having 4 double bonds at 5, 8, 11 and 14 position, and this is again the omega 6 fatty acid, क्योंकि अगर हम मिथाइल एंड से इसको डिफाइन करें तो ये फर्स्ट डबल बॉन्ड इसकी ओमेगा 6 पोजीशन पे. The other one is the eicosapentaenoic acid, which is again an omega 3 fatty acids, and it is otherwise it is having 20 carbon compound with 5 double bonds at 5, 8, 11, 14 and 17 position, but this is an omega 3 fatty acid because इस साइड से अगर हम ओमेगा एंड से इसको ओमेगा कार्बन से काउंट करें तो एट दी थर्ड पोजीशन जो है ना इसका ये 17 जो है ये थर्ड पोजीशन इज दी ओमेगा कार्बन से इसका डबल बॉन्ड है. सो दिस इज एन अदर एग्जांपल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड. एराकिडोनिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ पैराक्राइन हार्मोन्स कॉल्ड इकोसानाइड्स. अभी हमने क्यों पढ़े हैं अभी तक कि हम डिफाइन कर सकें कि लिनोलेनिक एसिड लिनोलेइक एसिड इनके अल्टीमेटली क्या इफेक्ट्स हैं बॉडी पे, ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है. तो दीज एराकिडोनिक एसिड प्रोड्यूस इकोसानाइड्स एंड एराकिडोनिक एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लिनोलेइक एसिड. Eicosanoids are chemical messengers which act over a short distance and include prostaglandin, leucotins and thromboxanes. ये जो एराकिडोनिक एसिड है ये केमिकल मैसेंजर्स बनाता है. जो पैराक्राइन है जो थोड़े से डिस्टेंस के सेल टू सेल जो है ना इंटरेक्शंस में ये मैसेंजर फॉर्म केमिकल मैसेंजर्स हैं. दीज आर कॉल्ड द प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सेन एंड द ल्यूकोट्रिन्स. ये पैराक्राइन हम इसको इसलिए बोलते हैं कि ये फ्रॉम द स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल इट एक्ट एज ए मैसेंजर. जबकि एंडोक्राइन आर दोज हार्मोन्स और दोज केमिकल मैसेंजर्स जिसका जो है प्रोडक्शन एरिया इज डिफरेंट और फार अवे फ्रॉम द साइट ऑफ इट्स एक्शन. दिस इज द diagram which defines the formation or production or synthesis of different chemical messenger or paracrine hormone. This is the arachidonic acid which is produced from the diacylglycerol by the action of diacylglycerol lipase. Similarly, it is also produced from the phospholipid with the action of phospholipases A2. This arachidonic acid is converted by two pathways. One is the lipoxygenase and the other is the cyclooxygenase pathway. ये cyclooxygenase जिसको हम COX भी बोलते हैं, COX1 and COX2 will define it later. ये COX2 inhibitors जो हैं वो डिफाइन होते हैं जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर्स हैं. So this arachidonic acid can produce leucotins, prostaglandins, prostaglandin H2 which is converted into thromboxanes, other prostaglandin and prostacyclins. These eicosanoids are semi-cyclic structure. They exert complex control over many bodily systems in the inflammation, immunity and messengers in the central nervous system. अब ये chemical messengers जो हैं जो arachidonic acid से produce हो रहे हैं जो eicosanoids कहलाते हैं. These are semi-cyclic structures and these are having a biological role in the body in the inflammation and in the immunity and in the central nervous system. This is again the diagram. This is the dietary linolenic acid. This linoleic acid it produce arachidonic acid. हमने define किया कि linoleic acid is the essential fatty acid. इससे synthesize हो जाएगा arachidonic acid and arachidonic acid by this in the cyclooxygenase and lipoxygenase pathway can produce thromboxane A2, leukotriene A4 and prostaglandins which are all called as eicosanoids, and these are having the different messengers, second messengers or the paracrine messengers of different having different actions.